Okay, now let us start the session. So today we are going to start session number 2 of chapter number 8 quadrilaterals, and we are going to start the properties of a parallelogram. Already the properties of parallelogram you have studied in class 8th, और वही सारे properties हम लोग पढ़ने जा रहे हैं but in the form of theorem. So first theorem is a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. So theorem के steps मैं already बता चुका हूँ. Given to prove construction if it is there, if required, and construction if it is required, and along with figure it will contain 50% marks of the weightage of the question. अगर 4 marks का है तो 2 marks weightage है, अगर 3 है तो 1.5. So let us start. This is a parallelogram and AC is the diagonal. AC is the diagonal, okay, and what is given that a parallelogram ABCD in which AB is parallel to DC, these two sides are parallel, and AD is parallel to BC, okay, and what we have to prove that इधर क्लियर लिखा हुआ है डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. नाउ देयर इज नो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, फिर भी हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ किए करके लिख लेते हैं. जॉइन AC. नाउ let us mark all these angles 1 2 3 4. Now we are going to take these two triangles. In these two triangles angle 1 is equals to angle 2. Why? Alternate interior angles. Right. So angle 1 is equals to angle 2. The reason is alternate interior angles as AB parallel to DC and CA cuts them. Okay, it is an transversal. Similarly, angle 3 is equals to angle 4. Why? Sir, alternate interior. Okay. So for which pair of parallel lines? Sir, AD and BC. Right. So angle 3 is equals to angle 4, alternate interior angles as AD parallel to BC or BC parallel to AD and CA cuts them, that is transversal. So now what about AC? What about AC? Side. Sir, common, sir. Right. So AC is equals to CA, this is common side, and therefore these two triangles are congruent by which criteria? Sir, ASA criteria, sir. Very good. By ASA congruence rule. If you write by mistake AAS, then also it is correct. Okay. Already मैं इसको पिछले ट्राइंगल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर AAS भी लिखोगे ASA के लिए, so that is correct. But जहाँ पे साइड इंक्लूड नहीं है, there we can't write ASA. So this is the proof of the first theorem. Now we'll move towards the second theorem, theorem number 8.2. In a parallelogram, opposite sides are equal. This property you know, but we are going to prove in the form of theorem. So फिर से एक parallelogram draw कर लिए, and this is the construction join AC. So a parallelogram ABCD in which AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. सेम प्रूफ है जो व्हाट प्रूफ वी जस्ट सीन इन थ्योरम नंबर 8.1, सेम प्रूफ है. टू प्रूफ बस चेंज हो जाएगा, प्रूफ सेम है और कंक्लूजन अलग है. सो AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD. दिस वी हैव टू प्रूफ. सो कंस्ट्रक्शन में जॉइन AC. प्रूफ में अगेन वी आर गोइंग टू मार्क 1 2 3 4 जैसा हम लोग पिछले थ्योरम में किए थे. Now in these two triangles, angle 1 is equals to angle 2. Why? Right. ये बिल्कुल कॉपी है, देखो पिछले थ्योरम का. Angle 3 is equals to angle 4. Why? Alternate interior angles. Okay. Next, AC is common. So these two triangles are similar, congruent. By which criteria? Sir, ASA. ASA congruence rule, right.
अब यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज कॉपी था थ्योरम नंबर 8.1 का. ना कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे AB is equals to CD and BC is equals to AD. Why? Sir, by CPCT. Very good. So AB is equals to CD and BC is equals to AD by CPCT. Now we are moving towards the next theorem. If each pair of opposite sides, now this is the converse of 8.2 theorem. 8.2 theorem में अगर पैरेललोग्राम है तो opposite sides equal है. अगर opposite sides equal है तो quadrilateral parallelogram होगा. This is the converse of theorem 8.2. So let ABCD is a quadrilateral in which opposite sides are equal. So एक figure draw कर लेते हैं इसके बाद. ABCD is a parallelogram we have to prove and opposite sides are equal, it is given. So what is given, it is clear to all of you? Yes, sir. Now कंस्ट्रक्शन में वापस हम लोग वही काम करेंगे. जॉइन AC कर लिए हम लोग. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूफ इट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम के लिए हम लोग को क्या शो करना पड़ेगा? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है करके. सो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स को लेके. इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA we are going to prove these two triangles congruent. So कैसे करेंगे देखो. AB is equals to DC given and BC is equals to AD, this is also given. One more pair of side is equal. Tell me which one. Sir, AC. Right. Yes, sir, AC. AC is common. So these two triangles are congruent by which criteria? Sir, SSS criteria, sir. Right. So by SSS congruence rule. Now if these two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So angle BAC, ध्यान से देखो, angle BAC, this angle is equals to this angle DC है. I think color थोड़ा dark ले लेते हैं. ये वाला जो एंगल है, this angle is equals to this angle. Clear है? By CPCT. Yes, sir. But these are alternate interior angles. So therefore, for which pair of lines? AB and DC. So DC. AB is parallel to DC. This is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now हम लोग को एक पेयर और प्रूफ करना है पैरेलल. कौन सा? AD पैरेलल टू BC. सिमिलरली, क्योंकि एक प्रूफ करके हम लोग क्या लिखेंगे? सिमिलरली लिखेंगे. ओके. सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC. सो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया. दैट मीन्स ABCD इज ए पैरेललोग्राम. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we will move towards next theorem, theorem number 8.4. In a parallelogram, opposite angles are equal. This property you know, but we are going to prove this theorem. This is in the form of theorem. So एक parallelogram draw कर लिए. What we have to do, we have to prove these two triangles congruent. जो थ्योरम नंबर फर्स्ट में हम लोग किए थे बिल्कुल कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ पर. सो व्हाट इज गिवन दैट अ ट्राइंगल ABCD is a parallelogram in which AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. What we have to show, opposite angles are equal. तो एंगल B और एंगल D और एंगल A और एंगल D इक्वल है, प्रूफ करना है. क्लियर? कंस्ट्रक्शन जॉइन AC. Now we are going to prove these two triangles congruent. So उसका नेम कर लिए 1, 2, 3, 4. बिल्कुल कॉपी है ये जो फर्स्ट थ्योरम हम लोग किए हैं, बिल्कुल कॉपी है. So in triangles ABC and CDA we have first कौन सा लिए थे वहां पर? Angle 1 is equals to angle 2. Why? Right. Alternate interior angles as AB parallel to DC and CA cuts 10.
नेक्स्ट पेयर कौन सा लिए थे हम लोग? Angle 3 and angle 4. Right. So angle 3 is equals to angle 4. Reason? Alternate interior angle. इस स्टेटमेंट के फॉर्म में बताओ. Angle 3 is equals to angle 4. Alternate interior angles for which pair of parallel lines? AB and DC. Right. AD parallel to BC or BC parallel to AD. And CA is the transversal that cuts them. And AC is common. So these two triangles are congruent by which criteria? Right. ASA congruence rule. So now these two triangles are congruent. So we can write angle B is equals to angle D. Why? Sir, CPCD. Right. अभी देखो जो प्रूफ करना था एक पेयर हम लोग का प्रूफ हो गया. Now we have to prove the another pair. तो उसके लिए हम लोग ये दोनों यूज करेंगे. We'll use this two. So we have already shown that angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. That is proved above. So if we add क्रॉसली, अगर हम लोग क्रॉस में वो ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो भी वो इक्वल होगा क्योंकि ये पूरे इक्वल्स है. सो इन 5th चैप्टर आल्सो यू स्टडीड इफ इक्वल्स आर एडेड विद इक्वल्स देन द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल. सो वी विल ऐड एंगल 1 and angle 4 and angle 2 and angle 3, so they are also equal. So what you will get if you add these two? Angle D in the D. एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से क्या मिलेगा? एंगल 1 और एंगल 4, what you will get? Angle A. And what you will get if you add these two? Angle C. Angle C. Angle C. So we conclude that angle A is equals to angle C. Hence angle B is equals to angle D and angle A is equals to angle C. Proof is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we'll move towards theorem number 8.5. If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. So this is the converse of theorem 8.4. 8.4 में हम लोग क्या पढ़े थे? अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है. अगर क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है. सो दिस इज द थ्योरम. सो विल स्टार्ट विथ वन पैरेललोग्राम इन विच ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एक ये वाला एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C. दिस टू एंगल्स आर इक्वल. एंड नेक्स्ट पेयर कौन सा इक्वल है यहाँ पर? सर एंगल B और एंगल B और एंगल D. राइट. सो जो येलो कलर मार्क और ब्लू कलर मार्क जो मैं किया हूँ दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके. सो नेक्स्ट, what is given that a quadrilateral ABCD, this is not a parallelogram, this is a quadrilateral. We have to prove that ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. What we have to prove? Next step to prove क्या आएगा? What we have to prove? The quadrilateral is a parallelogram. Right. ABCD is a parallelogram. We have to prove. Now there is no construction here. यहाँ पे construction की जरूरत ही नहीं है. So we'll start with angle A or angle B. What is the sum of angle A and angle B? 180 degree. Why? Why? The adjacent angles of No, parallelogram नहीं. Parallelogram है ही नहीं है. Proof करना है. You can't write that the adjacent angles, the sum of adjacent angles is 180 degree. Sir, angle A plus angle B is equal to angle C plus angle D, sir. Okay, fine, very good. So we'll start from that. हम लोग का टारगेट अभी क्या है कि ये दोनों का सम 180 प्रूफ करना है. So we'll start with what is given that we are going to take. So angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. This is given. So just now
one of the student told that angle A plus angle B is equals to angle C plus angle D. Now what is the sum of all the angles? 360 degrees. 360 degree. Why? 60 degrees. Why 360 degree? Why? Angle sum Sir, angle property of quadrilateral. Right. Angle sum property of quadrilateral. Now angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. The reason is that angle sum property of quadrilateral. Now ये दोनों equal है, angle A plus angle B and angle C plus angle D. So each will become equals to 180 degree. इसको step by step में भी show कर सकते हैं और you can write directly also. How you can write in step by step? Replace angle C plus angle D by A plus B. फिर 2 times of A plus B is equals to 360 degree. Then A plus B is equals to 180 degree. Otherwise you can write directly also. So this is clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now Yes, sir. angle A और angle B का sum 180 degree आ गया. So if you see these two lines, see carefully, AD and BC. AB is the transversal for these two lines. थोड़ा extend करके सोचो. Yes, यहाँ sir. तक. और ये दोनों co-interior angles है. And the sum of co-interior angles is now equals to 180 degree. So that means these two lines are parallel. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. उसको कैसे लिखेंगे देखो. Now the lines segments BC and CD are cut by a transversal AB such that angle A plus angle B is equals to 180 degree. So therefore AD is parallel to BC. Why? Because angle A and angle B are co-interior angles. Whether this step is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब हम लोग को एक और पेयर प्रूफ करना है. One more pair we have to prove. So अभी जैसे हम लोग angle A plus angle B is equals to 180 degree प्रूफ किए थे, वैसे ही we have to take the another pair. So we can take these two pair. So उसको कैसे लेंगे देखो next section में. Angle A is equals to angle C and angle D is equals to angle B. It is given. अब हम लोग इसको मैंने रिवर्स में लिखा है. एक्चुअली इन ऑर्डर इट इज एंगल B is equals to angle D, बट मैं उसको थोड़ा रिवर्स करके लिखा हूँ. एंगल D is equals to angle B. नाउ व्हाट इज द सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल D? Sir, angle C plus angle B, sir. राइट. सो एंगल A प्लस एंगल D is equals to एंगल C प्लस एंगल B. अभी हम लोग पिछले स्टेप में जैसे हम लोग शो किए थे that each angle will be equals to 180 degree. So we can write directly. Why? Because since angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. अब by angle sum property of quadrilateral. Already इस क्वेश्चन में एक बार मेंशन कर दिए हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. Now see carefully for angle D and angle A. AB and DC are the lines which is cut by a transversal DA. So these two are interior angles, co-interior angles on the same side of the transversal, and the sum of these two angles is equals to 180 degree. तो कौन सा लाइन पैरेलल हो जाएगा? कौन से लाइन्स Sir, पैरेलल? CD और AB, sir. राइट. सो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ द लाइन्स DC and AB are cut by a transversal DA such that angle A plus angle D is equals to 180 degree. So therefore AB is parallel to DC. Why? Because angle A और angle D क्या है? Co-interior angles. So now both the pairs of opposite sides are parallel. AB parallel to DC and AD parallel to BC. We proved these two pairs are parallel to each other. So we can conclude that ABCD is a parallelogram. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So now we will move towards the next theorem, theorem 8.6.
The diagonals of a parallelogram bisect each other. This property also you studied in class 8, but here we are taking up as a theorem. So let us start with the given. Suppose ABCD is a parallelogram in which AB is parallel to DC and BC is parallel to AD, and its diagonals AC and BD intersect at point O. What we have to show, क्या प्रूफ करना है हम लोग को यहाँ पर? So they bisect each other, the diagonals. So bisect each other के लिए क्या दिखलाना पड़ेगा यहाँ पर? OA is equals to OC. AC bisects DB, sir. उसके लिए So क्या OA दिखलाना? is equal to OC and OD is equal to OB. वेरी गुड. सो टू प्रूफ में यही आएगा. उससे पहले हम लोग ये सारे एंगल्स को हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए 1 2 3 4. नाउ विल राइट टू प्रूफ, दैट इज OA is equals to OC and OB is equals to OD. Now there is no construction here, so we'll start with proving these two triangles congruent. कौन कौन सा ट्राइंगल? AOB और ट्राइंगल COD. ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग को congruent प्रूफ करना है. So we'll take these two triangles. So angle 1 is equals to angle 2. Why? Sir, alternate interior angle. उससे पहले AB is equals to CD भी है. Why? Why AB is Opposite equals to sides of parallelogram are equal. Very good. Opposite sides of parallelogram. इतना लिखने से भी चलेगा. And angle 1 is equals to angle 2. Just now you told that alternate interior angles when AB and DC are cut by transversal CA. And one more pair are equal, that is angle 3 and angle 4. Why? Alternate interior. Alternate interior angles when AB and parallel to DC cut by a transversal DB. Clear? So now these two triangles are congruent. By which criteria? ASA. ASA. Right. Good. So if you write by mistake AAS also, that is also correct. Okay. Next, if these two triangles are congruent, so we can write OA is equals to OC and OB is equals to OD by CPC. So CPCT. very good CPCT. So theorem 8.6 हो गया. इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. Right. No, अब हम लोग आज का लास्ट थ्योरम में जा रहे हैं. आज के सेशन का लास्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 8.7. इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ये 8.6 का कन्वर्स है. दिस इज द कन्वर्स ऑफ 8.6. 8.6 में था कि पैरेललोग्राम अंजलिका वंगरे. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. वहां पे parallelogram था तो diagonals bisect हो रहा था. So this is the converse of theorem number 8.6. So what is given in a quadrilateral ABCD? Now this is a quadrilateral, not a parallelogram, whose diagonals AC and BD bisect each other or intersect at points such that OA is equals to OC and OB is equals to OD. Figure is clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what we have to do? अच्छा, what we have to prove here? क्या proof करना है? That the diagonals bisect each other. Sir, OC is equal to O and OD is equal to OB, sir. What? अरे वो तो दिया हुआ है. क्या proof करना है यहाँ पर? The diagonals of Sir, the AB is quadrilateral parallel bisect. to BC and BC is parallel to AB. What? The main target. The quadrilateral is a parallelogram. Very good. ABCD is a parallelogram. So now there is no construction here. So हम लोग अभी ये दोनों triangles को congruent proof करने जा रहे हैं first of all. So how will you prove that? कोई बताएगा कैसे proof करेंगे दोनों triangles को congruent?
Sir, OC is equal to OA and OD is equal to OB, and sir, angle AOB is equal to angle DOC, sir, vertically opposite angles. Okay, so we'll take first of all what is given, that OA is equals to OC and OB is equals to OD. This is given, and angle AOB is equals to angle COD. Why these two angles are equal? Sir, vertically opposite angles. Right, vertically opposite angles. Now, so these two triangles are congruent. By which criteria? Sir, SS. SAS. Right, SAS criteria. Now, if these two triangles are congruent, तो उसको एक बार mark कर लेते हैं 1, 2, 3, 4. So, if these two triangles are congruent, so angle 1 is equals to angle 2. Why? Sir, Alternate interior angles कहाँ से? Parallel तो दिया ही नहीं है. We have to show that already congruent proof कर दिया ना? CPCT. Right. CPCT. Angle 1 is equals to angle 2 by CPCT. Now we will say that these two angles are alternate interior angles when AB and DC lines are cut by a transversal CA. So AB parallel to DC. Clear है? Yes, sir. Okay. So, but these are alternate interior angles, so therefore AB parallel to DC. See, इसमें mandatory नहीं है कि पूरा वो statement लिखे कि but these are alternate interior angles when AB and DC are cut by a transversal line CA. You can write simply, but these are alternate interior angles, so therefore AB is parallel to DC. So, first pair of parallel lines are over. Now we are going to prove the second pair. सेकेंड पेयर कौन सा है? AD और BC. सो उसके लिए हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे. दिस टू ट्राइंगल्स सिमिलरली जैसे हम लोग प्रूफ किए थे, दैट इज OA इज इक्वल्स टू OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB. नाउ दिस टू एंगल्स आर इक्वल. व्हाई? Sir, vertically opposite angles. So again these two triangles are congruent by which criteria? Sir, SAS. SAS criteria. So we can write angle 3 is equals to angle 4. Why? Sir, CPCT. Sir, CPCT. Right, by CPCT. Again, but these are alternate interior angles when AD and BC are cut by transversal DB. Clear है? Yes, sir. My cursor is visible, huh? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, but we will write only, but these are alternate interior angles, so AD is parallel to BC. So, we proved both the pairs of opposite sides are parallel. So, we can conclude that ABCD is a parallelogram. Proof is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, we are going to see one example, only one example today because time almost हो रहा है. तुम लोग का next period भी classes है. So show that each angle of a rectangle is a right angle. You know the property that कि rectangle में हर एक angle 90 degree होता है. But you have to show that each angle of a rectangle is a right angle. What is the definition of rectangle? Sir, in Sir, which it is a the opposite parallelogram side, in which opposite sides are equal. एक मिनट. Pranav Bisen, what is rectangle? Sir, in parallelogram, each angle is 90 degrees. अरे each angle तो 90 degree proof करना है. What is the definition actually? Sir, in parallelogram, opposite sides are equal. No. See, listen carefully what I am going to say. A rectangle is a parallelogram in which or one of whose measure of angle is 90 degree. फिर से सुनो. What is rectangle? Rectangle is a parallelogram जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ओके उस दिन भी मैंने कहा था कि ऑटोमेटिकली अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएगा. तो वही प्रूफ करना है हम लोग को यहाँ पे. ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल. तो एक डायग्राम बना लेते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, ABCD is a parallelogram in which one angle A is 90 degree. Diagram is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, So sir. ABCD is a rectangle. That means ABCD is a parallelogram. So we can use the property of parallelogram.
पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट आई एम गोइंग टू यूज. और एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सा? एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 degrees. 180 degrees. Right. So AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, and AD is parallel to BC and AB is a transversal line. So angle A plus angle B is equals to 180 degree. Why these two angles is equals to 180 degree? Sum of the co-interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. Okay, क्योंकि angle A और angle B co-interior angles हैं. Now what is the value of angle A is given? 90 degrees. 90 90 degrees. So 180 minus 90 degree 90 degree हो जाएगा. क्लियर है? एंगल A और एंगल B 90 डिग्री मिल गया. एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. सो एंगल C, एंगल A बोथ विल बी 90 डिग्री. ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा. क्यों? वाई? Opposite angles. Yes, opposite angles of parallelogram are equal. Hence, thus each of the angles of a rectangle is a right angle. So this is the last question of today's session. So now I am going to give assignment question. Only 3 questions are there. It's a very easy question. The first one, you have to show that the diagonals of rectangles are equal. Rectangle are equal. एंड दिस इज ऑलमोस्ट क्लास 8 में कर चुके हैं ऐसा वाला क्वेश्चन. पैरेललोग्राम में एक एंगल दिया हुआ, बाकी सारे एंगल्स निकाल लें. एंड दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस एंगल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड एंगल OBC. सो 3 क्वेश्चंस you have to complete and you have to send me through WhatsApp. So that's all for today's session. Thank you very much. किसी को कोई डाउट है किसी भी सेक्शन में? No, sir. हाँ, और 1.5 आवर नहीं, मैं 9th B के क्लास के बाद अपलोड करूंगा, 3:10 के बाद अपलोड करूंगा, क्योंकि 2:30 से 3:10 मेरा लास्ट पीरियड है आज 10th क्लास में. उसके बाद मैं अपलोड करूंगा. एंड यू प्लीज वॉच वंस अगेन एंड यू कंप्लीट नोट्स फ्रॉम दैट वीडियो. ओके,